it but will never own. Let us be clear. Any so-called Shura may issue threats in Pashto, but its digital propaganda is subtitled in every language of discontent. A bomb in Peshawar today draws its ideological fuse from the chat room somewhere in northern Africa, its wiring diagram from a tutorial filmed in Damascus. Terrorism is borderless, and therefore the fight we wage is not Pakistan's private quarrel. It's a civilizational self-defense on behalf of all of humanity. When the Tehreek-e-Taliban or the Majid Brigade tweets its manifesto, the algorithm that amplifies it does not stop at the Duran line. It ricochets through Paris, Perth, and beyond. If we stand down, who will stand up? Across 2 decades, Pakistan's armed forces, backed by an iron-willed citizenry, have broken the backs of Al-Qaeda networks, dismantled so-called caliphates in the name of Daesh or anybody else, and driven the TTP from fortresses to the foxholes. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Rad al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. Today's operations in Balochistan and elsewhere sever the nexus between separatism and foreign-funded terror. These campaigns are not video-gamed stories from offshore carriers. They were boots in the dust, medics in the mud, and school teachers reopening classrooms behind the front lines. The world enjoys the light of conferences that debate violent extremism. Pakistan battles these demons daily on the front lines. Our roads scarred with IED and suicide bomber craters are the tariff we pay so the rest of humanity may commute in peace. Is it too much to ask that the visa desks respect the Pakistani passport that guards their peace? That multilateral lenders price our courage into their risk models? That media houses spell Pakistan without the lazy prefix of troubled? Respect is the minimal dividend of sacrifice. And for across the Durand line, the Taliban regime was greeted by many as inevitable fact. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil and a sanctuary for the TTP, the BLA, the ETIN, and so much more. We say to Kabul, sovereignty confers duty. Stop the exodus of fighters. Choke the traffic of arms and honor the blood-priced Doha commitments, or be judged by the company you keep. I would like to propose some points for Pakistan and the conscientious world. One, we need equitable burden sharing. Terrorism, CT Finance, what used to be known as the Coalition Support Fund, cannot be a tip left on the table of counterterrorism. We ask for structured investment in counterterrorism, in counter-violent extremism, in modern technology and weaponry, the hardware for our resilience. And to view development as an antidote. Every school built in Waziristan is a bullet we never have fired. Let CPAC be joined by PeacePAC, a people's economic and cultural corridor that funds micro-enterprise, women's colleges, and solar grids in areas facing the brunt of this new wave of terror, from ex-Fata to the shores of Balochistan. No counterinsurgency has achieved victory without first winning hearts and minds. In the context of the first fight against terrorism in Afghanistan and Pakistan,
I recall when Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto was campaigning anew to confront this menace, well, she warned in Pakistan in her final speech that these militants want to remove Pakistan's flag from SWAT, and rallied her country as the first female prime minister when many male politicians cowered or shirked from their responsibility to speak out. She rallied her country and she said she would be the one to lead. She would be the one to raise Pakistan's flag in SWAT. She did so in a context, and the context was a global understanding about the next phase to combat violent extremism and terrorism within Afghanistan and Pakistan. Of course, it meant joint resolve and kinetic operations that we would ultimately begin in South Waziristan and North Waziristan, etc. But that kinetic action was to be coupled with investment in the hearts and minds of the people of Afghanistan and Pakistan. Within the context of what the shared experience of the end of the World War II and the international community's commitment then to a Marshall Plan that saved or invested in the economies of a war-torn Europe to ensure future generations would not be drawn back into the mouths of, at the time, fascism. A similar commitment was made by the international community to her, to Pakistan, to the world, that we'll stand shoulder to shoulder with you in this fight, but we will not cut and run. We will invest in a new Marshall Plan for Afghanistan and for Pakistan to ensure that future generations are not lost to the menace of terrorism. So, of course, we all are aware that we have not lived up to that commitment. In the current context, it still means that we should find our own opportunities. That is the context with which President Zardari initiated the China-Pakistan Economic Corridor. It wasn't geopolitics. It was an understanding that the eastern route that was to go through Pakhtunkhwa and descend into Balochistan would drive economic development and economic activity in those areas that were the most devastated by terrorism. So whether today it is in a multilateral context or by focusing on our own economic opportunities, we need to provide our people, the people of Pakistan, with hope through economic opportunities so they're not drawn back towards this menace of terrorism. We need to focus on the digital realm, and I've advocated before for a digital Bill of Rights. We absolutely require a digital Bill of Rights for our youth, one that grants them the opportunity to flourish in the digital age, protects their digital fundamental rights, but also acts as a digital iron dome against the proliferation of extremist content online. Algorithms that detect copyright breaches in milliseconds can be trained to throttle extremist content in the same blink. Silicon Valley must police its platforms, or we must legislate teeth into their negligence. On financial support, banks that knowingly clear terror-linked remittance should face the same stigma as those that launder drug money. FATF must evolve from a punitive grey listing to proactive intelligence pooling. And finally, success cannot come with hard power alone. We must display smart power. The combination of hard and soft power shall snuff out violent extremism from its roots so that it may never re-emerge again. On the narrative front, extremism is not an illness just of the Kalashnikov. It is an illness of the textbook, the pulpit, the WhatsApp forward. We shall write a curriculum where Ibn Sina walks behind
Beside Iqbal, where the Prophet's Charter of Medina is studied as the first social contract, and where Jinnah's August 11th speech is memorized before breakfast, we shall reclaim the microphone from the priest who preaches division and hand it to the young scientist who codes solutions. For our youth, 64% or 65% of Pakistan is under the age of 30. Terror groups salivate at that statistic. I look at the same number and see a firewall. Give this generation broadband, venture capital, startup opportunities, and no recruiter in the tribal valley will match the romance of discovery we can offer. For our women, the women of Pakistan, are our untapped brigade. No nation can fight half-handed while half its population is sidelined. The daughter of the Indus who pilots the F-16, the widow who runs a microloan cooperative in Swabi, the coder in Karachi who encrypts military comms, they are the insurgents against ignorance. And ignorance is terror's godfather. Some capitals wag their fingers at Pakistan and ask, is Pakistan doing enough? I respond in the idiom of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, we have bled enough to write the preface of peace in our own ink. We will not have that manuscript proofread by those who stayed safe behind oceans and alibis. In a message, a word to the merchants of hate within, to those who romanticize the terror culture from drawing rooms and YouTube channels. Let me be unambiguous. We will repatriate your hashtags to the courts, your bank accounts to the audit ledger, and if necessary, your fantasies to the iron bars of law. There is no constitutional right to weaponize religion. If the world demands that Pakistan outlaw militias, which we are doing and have done, it must also demand that every people live free of collective punishment. Selective outrage is the oxygen of extremist recruiters. From the Kashmir Valley to the olive orchards in Palestine, the world must deliver a just peace. To India, I say, we have a shared stake in ending this cycle of fire. Since Pakistan and India last sat across the table to discuss terrorism in 2012, the world has changed, and so have we. We have fought and won the most extensive counter-terrorism campaign in modern history. South Waziristan was cleared, North Waziristan dismantled, urban sleeper cells uprooted, and new operations launched after the fall of Kabul. We transformed our financial system to meet the most rigorous global standards after our successful FATF grey list exit. Pakistan stands among the most serious counter-terrorism states, if not the most serious counter-terrorism state on earth. It is time that India recognizes this transformation, not as a concession, but as an opportunity. Terrorism is a collective menace. No border fence, no nationalist rhetoric, no regional hegemony can shield one nation from a fire it may have helped light on the other side. If infrastructure, safe haven, or subsidy is extended to groups like the BLA or the TTP, that same network may one day irrigate militancy that threatens India itself. Fire does not distinguish between the arsonist and the architect. We all learned this the hard way after 9/11, and it's time India does so as well. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed.
It respects no border and abides by no law. I offer from this floor a clear proposition. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror, not as adversaries playing a zero-sum game, but as neighbors who share a moral and civilizational obligation to protect over 1 billion souls from the plague of extremism. All it requires is for India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss, pursue peace with Pakistan, sit with us, talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people. Let us end the weaponization of water and build instead a peace as mighty as the Himalayas. Let us return to our shared traditions grounded not in hatred, but in the ancient soil of the Indus Valley civilization. It is not weakness to extend a hand, it is wisdom. And to the world, I would like to extend an invitation. Come train with us. Come learn from Pakistan. Learn from our armed forces. Learn from our special forces. Learn from our police force. We have waged the most extensive counter-terrorism, counter-violent extremism battle from generation to generation. Study our counter-terrorism authority dataset. Few databases are richer. Come walk a rebuilt Pakistan in the aftermath of terror. Few places tell a more vivid before and after. Let's partner and let partnership replace perception. I speak not just as former foreign minister or chairman of the Pakistan People's Party, but as a son of the soil who has met mothers holding photographs of children lost to blasts, as a brother of journalists who dodge bullets telling the truth, as a citizen whose generation was shaped by the sound of explosions. I pledge that Pakistan will pursue every cell, choke every pipeline, and confront every narrative that seeks to turn our cradle of civilization into a cemetery for hope. And from this house, I ask a unanimous resolve. In the words of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, we have come too far, sacrificed too much to turn back now. And from our allies, I ask the courage of consistency. Stand by us when we win headlines, and stand with us when we bury our dead. And in conclusion, when my grandfather Shaheed Zulfikar Ali Bhutto thundered at the United Nations in 1965, he warned, we will fight for 1,000 years, but we will not surrender. Today, I echo him with one revision. We will fight for as long as it takes, but we will not need 1,000 years, because our enemy is small against the expanse of our conviction, and conviction is the oldest, strongest weapon known to humankind. Let the clerics of chaos know. The people of Pakistan have endured empire and earthquakes, partition and dictatorship, floods and pandemics. Your improvised explosives are a footnote in a story whose chapters are written in resilience. Let the merchants of fear know, each time you strike, we rebuild taller. Each time you divide, we reconcile deeper. Each time you preach death, we invest in life. And let the world know, when the dust settles of this era, the chronicles will record that Pakistan, misunderstood, maligned, yet magnificent, stood at the trench line, stared into the abyss, and by the grace of God and the grit of our people, dragged humanity back from the brink. Pakistan, Zindabad.
इस्लामाबाद में दुनिया के लिए पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उनका कहना था दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया है। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ बरसरे पैकार है। हमने अपनी आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानियों माली नुकसान उठाया है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ बरसरे पैकार है। हमने अपनी आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ डाली है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। अफगानिस्तान से कहा है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग दुनिया के अमन के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर आपको बताएंगे कराची के इलाके कोरंगी 3.5 में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया है। मकतूल उमर SPU में तैनात था। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल खान से, जो इस वक्त हादसे के मकाम पर मौजूद हैं। बिलाल, आप इस वक्त हादसे के मकाम पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है और कैसे पेश आया ये वाक़या। जी बिल्कुल, देखिए आबादी कॉलोनी थाने की हदूद कुरंगी 3.5 पर एक पेट्रोल पंप है। उसके सामने बिल्कुल एक गली है, वहाँ पर नाबालिग मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की जानिब से फायरिंग की गई है और फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जिसकी शनाख्त उमर के नाम से कर ली गई है वो जाँ बहक हो चुका है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा इस साइड पे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर SSP कुरंगी भी पहुँचे हैं, तमाम तर वाक़े का जायजा ले रहे हैं, जबकि क्राइम सीन यूनिट की जानिब से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। अभी तक जैवों से कोई भी पिस्तौल की गोली का खौल बरामद नहीं हुआ है, जबकि पुलिस की जानिब से तमाम तहकीकात का अमल जारी है और ये बताया जा रहा है कि मकतूल जो है वो कायदाबाद का रिहायशी है और तमाम तर जो शवाहिद हैं उसको जो है मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि ये भी एक चीज़ चेक की जा रही है कि जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ पर क्यों आया था और यहाँ पर किससे मिलने आया था, क्योंकि जो पुलिस एहलकार है वो कायदाबाद का रिहायशी है और SPU यूनिट का में तैनात था, जहाँ पर मैकेनिक के तौर पर वो काम किया करता था। पुलिस की जानिब से तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक जो है ये मालूम नहीं हो सका कि जो मकतूल था वो यहाँ पर क्यों आया था। उसके अलावा जो शाहिदीन उनकी जानिब से बताया गया कि 7 से 7:15 बजे करीब ये तमाम तर वाक़या हुआ है। उसके अलावा शाहिदीन की जानिब से अभी तक बयान नहीं दिए गए, ना ही शायद कोई सामने आ सका है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लगे जो CCTV कैमरे थे उनकी फुटेजेस हासिल करने का सिलसिला जारी है। जी बिलाल, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन TV मोबाइल ऐप। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम जरा हटके, देखते रहिए डॉन न्यूज़। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है कैविटीज के चांसेस 50% से कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। देख घने और 5 गुना तक मजबूत बाल 10 रुपए के साशे में भी। मेरी नंबर 1 चॉइस ओलिविया, शुक्रिया। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। दीगर इश्तराक में शामिल हैं True power, true comfort, True T3, Gree, built for the extreme. खुलने लगा है अगले साल कराची का शौकत खानम हस्पताल। आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह खान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। दरियाए स्वात, ज़ाहिर है आपको पता है पिछले हफ्ते शदीद गुस्से में आ गया था और उसने बहुत से इंसानों को इस गुस्से में निगल लिया। अब वहाँ दोनों तरफ किनारों पे सफाई की मुहिम शुरू हो गई है। यानी जो तजावज़ात हैं वो अब शायद हुकूमत को नज़र आने लगी हैं और वो कह रहे हैं कि हम इनकी सफाई कर देंगे। तो क्या ये वाकई एक हकीकी मुहिम है या मीडिया के कैमरे के लिए है? इसके अलावा ये भी इत्तलात हैं कि अमेरिका अब सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि
कुछ और अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुक़ात नॉर्मलाइज़ करें और जो माहिदा इब्राहिमी है जो 2020 में चंद ममालिक के दरमियान हुआ था उसका दायरा वसी किया जाए, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ अपने मुल्क की बात। आपको याद होगा कि जब बहुत साल पहले जो जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान है उनमें ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और राह निजात शुरू हुआ था, तो उस वक्त ये उम्मीद दिलाई गई थी कि दहशतगर्दी की कम से कम इन इलाक़ों से सफाई कर दी गई है। उसके बाद ये जो कबायली इलाक़े थे, कबायली एजेंसियाँ जिन्हें कहते थे अंग्रेज़ दौर की, उनको बाकायदा ज़िले की शक्ल दी गई और उन्हें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया बाकायदा। उस वक्त भी ये उम्मीद दिलाई गई कि अब चूँकि बंदोबस्त रेगुलराइज्ड हो गया है, कबायली इलाक़ा नहीं रहा, लिहाजा अब वो वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी। लेकिन पिछले चंद हफ्तों से बहुत ही ख़राब किस्म की ख़बरें आ रही हैं। मैं आपको उसकी जो शिद्दत है उससे पहले एक जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, ये इस्लामाबाद में इदारा है पिक्स के नाम से, उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो पिछला जून गुज़रा है अभी एक दिन पहले, इसमें 78 दहशतगर्द हमले हुए जिनमें 100 से ज़ायद हलाकतें हुई और इनमें 53 सिक्योरिटी पर्सनल शामिल है। और अगर गुज़िश्ता साल के आखिरी 6 महीने से हम मवाजना करें इस साल के 6 महीने का, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतों में 181% और नहीं सॉरी हलाकतों में बल्कि दहशतगर्दी की वारदातों में 176% इजाफा हुआ है इन 6 महीनों में 2025 के आखिरी जो 6 महीने 2024 के उनके मुकाबले में। 28 जून को एक और ख़बर आई कि मीर अली जो शुमाली वज़ीरिस्तान का कैपिटल है, वहाँ के करीब सिक्योरिटी काफ़िले से एक बारूदी गाड़ी टकराई और कोई 13 अहलकार जाँ बहक हुए, 24 ज़ख्मी हुए, ज़ख्मियों में सिविलियन भी शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द भी हलाक कर दिए गए। इसमें ज़ाहिर है कि किसने ज़िम्मेदारी कबूल की, किसकी ज़िम्मेदारी है, इसके लिए हमने खुरासान डायरी तो आपने सुना होगा, अपडेट उनका वर्जन है दहशतगर्दी के और अमन व अमान के बारे में एक्सक्लूसिव ख़बरें आपको खुरासान डायरी से मिलती हैं। उसके जो करता धरता है एहसानुल्लाह टीपू महसूद, जो कि एक बहुत ही कोना मश्क सहाफ़ी भी हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान हैं। टीपू साहब, ये बताइए कि हालात कितने ख़राब हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में रात का कर्फ्यू है, दिन में दफ़ा 144 है, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान का घर जो डेरा इस्माइल ख़ान में है उसके बारे में भी इत्तला है कि हुकूमत ने मंजूरी दी है कि वहाँ FC की प्लाटून लगा दी जाए। क्या हो रहा है ये? जी वुसै साहब, जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें तकरीबन 7 अजला बनते हैं, तो वहाँ पे हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, यानी सिक्योरिटी के हवाले से, और वहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो जिस तरह से इफेक्ट हो रहा है। और शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, अब जनूबी वज़ीरिस्तान को भी 2 अजला में तकसीम किया गया है। अपर वज़ीरिस्तान जो महसूद कबीले का इलाका बन गया और लोअर वज़ीरिस्तान जो मद्दई वज़ीर का। तो ये तीनों जो अजला हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान, अपर वज़ीरिस्तान और लोअर वज़ीरिस्तान, तो आए रोज़ वहाँ पे कर्फ्यू, यानी आज भी अभी जो मैं आ रहा था तो अनाउंसमेंट हुई है कि जो लोअर वज़ीरिस्तान है वहाँ पे कल उनके कुछ इलाकों में कर्फ्यू रहेगी। और आज एक बड़ा जिरगा भी हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहाँ, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन व अमान के हवाले से, तो उनकी जो इतलात आ रही हैं तो वो भी कुछ यानी पॉजिटिव नहीं है। तालिबान के हवाले से अगर बात कर लें कि पाकिस्तानी तालिबान के जो मुख्तलिफ फैक्शन हैं, जिसमें TTP सबसे बड़ा फैक्शन, फिर हाफिज़ गुल बहादुर और कुछ नए गिरोह भी आ गए हैं। इतिहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के नाम से, जिसमें यानी एक इतिहाद बन गया है गुल बहादुर के बीच में, लश्कर इस्लाम जो मंगल बाग का ग्रुप था खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट उसकी तरफ से, और कुछ हमें ये भी यानी इंडिकेशंस मिल रही हैं कि जो अलकायदा बर सगीर जो काफ़ी अरसे से डिफंक्ट। पेशावर हाई कोर्ट में दरियाओं में हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सवात बनू और मालाकंड समेत दीगर अजला के कमिश्नर्स को कल तलब कर लिया है। DG रेस्क्यू को भी कल दोबारा तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हकीम मोमन से। अब्दुल हकीम, मजीद अहवाल बताइएगा समाअत का। जी बिल्कुल, आज एक दरख्वास्त दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में कि दरिया के किनारों खैबर पख्तूनख्वा में जो गैर कानूनी तौर पर तजावजात खड़ी कर दी गई है वो इंसानी जानों के लिए
इंतहाई खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट में आज इसकी समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एस एम अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली ने की। समाअत के दौरान डीसी रेस्क्यू 1122 भी पेश